Dear students, through coming illustration, we will learn the application of the concept of symmetry for calculating effective resistance of any electrical network. By using the symmetry property, we can easily analyze the effective resistance of any complex circuit, and here we are going to discuss about parallel axis of symmetry. So let us move to illustration part. In this illustration, we are given each branch in the following circuit has a resistance capital R. This is a electrical network, and you can observe here each straight part is having resistance capital R. और ये जो हमारे पास नेटवर्क फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट पार्ट से मिलके, दिस इज हैविंग ज्योमेट्री ऑफ द स्क्वायर शेप का नेटवर्क है. वी कैन ऑब्जर्व हियर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आर ज्वाइंड बाय द कंडक्टिंग वायर. ये एक रिंग है जो इस स्क्वायर के कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही है. कंडक्टिंग वायर मींस नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस. दैट मींस द पोटेंशियल ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल. And here we need to find the equivalent resistance of the circuit between A is the center of the square, and B is any of the corner. So B is this corner. तो यहाँ पे हमें A और B के across equivalent resistance calculate करना है. Okay. First of all, we will observe the symmetry. हम लोग यहाँ पे observe करेंगे कि इस सर्किट में कोई symmetry है, और अगर कोई symmetry है तो उसका nature क्या है. For observing the symmetry, we can do one thing. We can join the initial and terminal point of the circuit. This is the initial point. Suppose current is entering from this point and coming out from this point. Okay. So if we join these 2 points by the straight line, we can observe symmetry about this line. If we extend this line, we can observe the mirror symmetry about this line. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मिरर रख दें यहाँ पे, तो दिस सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन. दिस टाइप ऑफ द सिमेट्री इज कॉल्ड द पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. दैट मींस यहाँ पे हमारे पास पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. दैट मींस अगर हम लोग इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर दें सर्किट के, और सर्किट उस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री रखेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके. और अगर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर कहीं किसी सर्किट में प्रेजेंट है, तो वी कैन से ऑल द पॉइंट्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द पैरेलल एक्सिस सिमेट्री विल हैव द इक्वल पोटेंशियल. ओके. तो अब हम लोग यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और अब हम लोग यहाँ पे सिमेट्री के बारे में कह सकते हैं. वी कैन से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, both points are symmetrical about this dotted line. This is the parallel axis of symmetry. Similarly, this point and this point are also symmetrical about this line. They will have the equal potential. इसका और इसका same potential होगा. Similarly, इसका और इसका same potential होगा. Similar statement is agree for this and this. ये भी symmetrical है, तो they will also have the equal potential. Similarly, potential of this point and this point will be the same. Potential of this point and this point will be same. Potential of this point of course is same as potential of this point, and same statement is applicable for this part of the circuit. Okay. अब हमें मालूम है कि equal potential के point और equipotential point can be joined together. How to join the equal potential point? We can do one thing. We can fold the circuit about this parallel axis of symmetry. अगर हम लोग इसे fold कर देंगे, our circuit will be like this. यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ऑल रेजिस्टेंस विल ओवरलैप. हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल हैव 2 रेजिस्टेंसेस, और जितने भी हमारे पास जंक्शन है उनके बीच में वी विल हैव द 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. ईच आर हैविंग द वैल्यू कैपिटल आर. दैट मींस द ईच एंड एवरी स्टेट पार्ट ऑफ दिस सर्किट विल हैव द रेजिस्टेंस इक्वल टू R by 2. तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू R by 2 होगी. ओके. अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम को नेक्स्ट पेज में फिर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे बना दें, इफ वी मेक द पॉइंट बी एट दिस पोजीशन, वी कैन डू like this, because the potential of this point and this point is same, and again we can observe this line is also having the symmetry of the circuit. That means this is again parallel axis of symmetry. If this is parallel axis of symmetry, we can fold the circuit about this line also.
अब हम लोग इस लाइन के अबाउट भी सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। ऐसा करने में ये पॉइंट और ये पॉइंट ओवरलैप होगा। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल हैव द equal potential. Similarly, this point and this point will have the equal potential. This point and this point will have the equal potential. Similarly, this and this will have the equal potential. This and this will also have the equal potential. So let us fold the circuit like this. अगर हम लोग यहाँ पे fold कर दें तो circuit will become like this. Okay. Now each and every resistance will overlap. एक दूसरे के parallel हो जाएगा. That means each resistance is now R/4. Okay. Now observe one thing. We can make the point B at this position also, because this is the conducting wire, so we can make point B here instead of making here. Now we can observe this is initial point A and this is the terminal point. If we join initial and terminal point here also, we will have the symmetry about this line. This is again parallel axis of symmetry. Now we can fold the circuit like this. अगर हम लोग सर्किट को फोल्ड करेंगे, this point and this point will overlap, this point and this point will overlap, and this point and this point will overlap, and circuit will be like this. Okay, here we can observe this line and this line will not be overlapped by any of the resistance. That means this and this will have the resistance R/4 and R/4. Okay, but this will be overlapped. So this will have the R/4 and R/4 are parallel, that is R/8, and this is R/8 and this is also R/8. Now we can simplify the circuit, right? Like this. Simplify, we can circuit. Now we can say current will come from this junction and come out from this junction. This and this will be parallel, this and this will be parallel. So circuit will be like this. Okay, and these two series branch will make this resistance equal to R/8, R/8, that will be equal to R/4, and here this is R/4 and R/8. These two resistance in series will make the resistance equal to 3R/8. So let us write the resistance. This is R/4 and this is 3R/8. Now we can further simplify. These resistances are in parallel, so parallel combination will be like this. This is R/8 and this is R/4, and the parallel combination of this will make this resistance, equivalent resistance of these two will be equal to 3R/20. Now these three resistances are finally in series. We can calculate the series resistance by adding the resistances. So equivalent resistance will be equal to 21R/40. This is the equivalent resistance. Okay. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.